We are live. Hi everyone. Firstly, welcome to Pratham's another video on Pratham Test Prep's YouTube channel. I hope all of us are safe and secure. Thankfully, the corona cases have gone down, but we still need to take up precautions, right? That's point number one. Point number two, जो अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे को पहली बार सुन रहे हैं, please don't forget to press the like button, subscribe button, and don't forget to press the bell icon as well. So with me in this session is Vineet Vinod sir. He's a very senior member at Pratham Test Prep, and him and I will be taking care of this session. बहुत अच्छा हमने इसको heading दी है, CUET 2022 अब क्या करें, right? अब इसके बाद क्या, right? So Vineet sir, first impressions of what has come. सर जब से CUET ने अपना नोटिफिकेशन लेकर के आया था, UGC ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि बेसिकली फॉर ऑल द सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज CUET होगा, तो बहुत कंफ्यूजन था, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा चल रहा था, स्पेशली आफ्टर दैट सिलेबस कि सेक्शन 1A होगा, सेक्शन 1B होगा, 27 डोमेन टेस्ट होंगे, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था. बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के कल के जो हमने न्यूज़पेपर में जो हमने आर्टिकल्स देखे, उसके बाद मतलब फर्स्ट इंप्रेशन मुझे यही लग रहा है सर, इट इज नथिंग न्यू, इट्स एक्चुअली ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल. सेम वही चीज है. फॉर इंस्टेंस मतलब अगर मैं ये देखूं कि पहले फॉर ई-कॉमर्स यू नीडेड मैथमेटिक्स, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट, एनी सॉर्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक DUJAT, यू नीडेड मैथमेटिक्स प्लस यू नीडेड the various aptitude tests. It is same like here it is as well the same thing. Absolutely. So नाम चेंज हुआ है एग्जामिनेशन का, the medium of examination चेंज हुआ है. Obviously more and more universities are getting added under CUCET, but the content remains same. That is the first impression of mine. Right. So like Vineet sir has just said, it's old wine in a new bottle. मतलब बच्चों and trust me, ये सबसे पहली चीज जो मैं सारे बच्चों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप सब लोगों के साथ मेरी सिंपैथी है. जितना एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ हो रहा है उससे ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन मैंने शायद कहीं नहीं देखी होगी, राइट? And this doesn't seem to end at all. It is just not ending anywhere for you guys, right? So आप ये समझ सकते हैं कि यार आप ही के साथ क्यों, right? But having said that, this is what we have to play with, and we have to test ourselves on it as well, right? So that is how it is. चलिए, जितने भी questions हैं आप हमारे को भेज के definitely पूछ सकते हैं कि if you are still confused about with respect to anything with respect to the CUET 2022. दो तीन चीजें, जैसे मैंने आपको बताया, सिंपैथी तो है ही है आपके साथ, बट काफी बच्चे इस बोर्ड में भी बैठे थे कि अब बोर्ड्स इररिलेवेंट हो गए हैं, should we stop studying for it? No, they are not irrelevant, because जो डोमेन में आने वाला है आपके साथ वो essentially 12th का ही सिलेबस होगा, right? So you will have to continue to focus on 12th. Yes, board marks are not relevant anymore, but इसके अलावा but domain is still going to be the important factor. अभी भी कुछ questions हैं जो पूरी तरह आंसर नहीं हुआ, which I am sure DU will be able to answer in due course of time. तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को ये बेसिक चीज जो हम समझाना चाहते हैं वो समझाते हैं. Vineet sir, can we have that PPT with all of them? Yeah, sure sir. Starting with that article that came in Hindustan Times and Times of India today. Yes. So the whole purpose of this session is to make you aware and to tell you that what could be the possible options, what could be the possibility so far as the DU is concerned, yes, right, in reference to CUCET. So this is the article which came in the newspaper. Sir, आपको visible है? Are you able to? हाँ जी, मुझे visible है. Importantly, बच्चों को visible है या नहीं है वो check करना पड़ेगा. Yeah.
अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो काफी हद तक चीजें क्लैरिफाइड हैं, बट देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज को रिलेटेड होगा, वो जरूरी है जानना। तो इससे ये हो रहा है कि यार DUJAT अलग एग्जाम शायद ना हो, इट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोप, बट जो उस पे मैथ्स कंपल्सरी है इज गोइंग टू बी सिमिलर टू व्हाट गेट्स आस्क्ड इन द BMS एंट्रेंस एग्जाम. That is very, very clearly mentioned. Maths as a domain is mentioned, but what we think that will come in the math domain is going to be similar to what gets asked in a BMS level exam. So आपकी preparation for BMS जो भी आप कर रहे थे प्रथम के साथ, वो आपको हेल्प करेगी इसको भी आगे पार करने में, right? Having said that, math is also compulsory for subjects like BCom honors, economics honors, maths honors, BMS, BBE and BBFIA. इन सब चीजों के लिए मैथ्स कंपल्सरी है. एक जो चीज जो मुझे समझ या क्लैरिफाई मेरे को ये आर्टिकल नहीं कर पाया है, ऊपर हम लिख रहे हैं कि मैथ्स इज कंपल्सरी फॉर बीकॉम ऑनर्स और नीचे हम लिख रहे हैं कि बीकॉम ऑनर्स के लिए आप मैथमेटिक्स के बजाय अकाउंटेंसी भी ले सकते हैं. सो दैट इटसेल्फ इज नॉट एडिंग अप. दैट्स वन मेजर एरिया ऑफ कंफ्यूजन फॉर मी, राइट? कहां पे जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो कंपल्सरी है, दैट इज फॉर BBE, इट इज फॉर BMS, इट्स फॉर BBFIA एंड इट इज आल्सो फॉर BA ऑनर्स इन हिंदी पत्रकारिता, राइट? सो हिंदी जर्नलिज्म के लिए भी जो एप्टीट्यूड पार्ट है वो कंपल्सरी है. हाउएवर जो मुझे एक बड़ी चीज जो इस चीज में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि हम वी वर टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स बिकमिंग इररेलेवेंट, स्कूल्स बिकमिंग इररेलेवेंट. व्हाट हैज चेंज्ड? कुछ चेंज हुआ है ज़मीनी से? मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा चेंज हुआ है, बिकॉज अभी भी 12th के सब्जेक्ट के बेसिस पे ही बच्चों को आगे एडमिशन दी जा रही है. एक तरफ हम ये बोल रहे हैं कि बोर्ड का प्रेशर हम हटा रहे हैं, बट आप सारा का सारा प्रेशर इन एग्जाम पे तो फिर भी डाल रहे हैं, राइट? And you're not giving students multiple chances to improve their score, right? So एक बार है, एक दिन में अगर आपका दिन अच्छा गया और आपने मतलब बहुत अच्छा पेपर कर लिया तो it's fine. Otherwise it is the same, right? You will still be banking on how you perform on those days of the exams, right? So pressure मेरे हिसाब से किसी भी हालत में कम नहीं हुआ है. It has only and only increased. So those are my initial thoughts on it as well. So anything else that you want to add, Bineet sir? Yes sir. So तो ये जो actually बच्चों का सर, this is exam above examination. Yes. पहले क्या होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशंस लेने हो तो बोर्ड मार्क्स वाज सफिशिएंट, उसी के बेसिस पे एडमिशंस होते थे. अब एक्चुअली दिस इज न्यू एडिशन ऑफ द एग्जामिनेशन. And जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, especially the boss of all the universities, UGC and the various institutions of the government, उनका बेसिकली ये एजेंडा, ये पर्पस था ही नहीं कि बेसिकली मतलब ये कहने की बात है कि एग्जामिनेशन या प्रेशर हम कम कर लेंगे. बेसिक मोटिव ये था कि जितने बोर्ड्स अलग अलग हैं इंडिया में, राइट, उनको वहां पे स्केलिंग करनी पॉसिबल नहीं. जैसे कि अगर आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का स्पीच सुने जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उनका कंसर्न उन्होंने एक ही शेयर किया था कि पिछले 4-5 इयर्स का जो डेटा शो कर रहा है उनको, वो ये शो हो रहा है कि DU की एडमिशन प्रोसेस इज गेटिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर बोर्ड्स, बिकॉज ही हिमसेल्फ सेड दैट देयर आर सर्टेन लीनियंट बोर्ड्स. स्टेट बोर्ड्स काफी टफ बोर्ड होते हैं, कंजर्वेटिव बोर्ड होते हैं, देन देयर आर मॉडरेट बोर्ड्स. अब इंडिया में सारे बोर्ड्स को बेसिकली स्केल अप करना पॉसिबल नहीं है, एंड दैट द रीजन ये बेसिकली सिस्टम ले आया गया, जहां पे कि अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर यहाँ पे कि अभी तक हम लोग कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशंस लिया करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो नॉर्मल कोर्सेज में एडमिशंस लेने होते थे. बट नाउ इट विल बी अ परसेंटाइल बेस्ड सिस्टम. And what they're actually mentioning, percentile based system means there is no loophole. You can't find much of loophole, because ultimately if you are in top 1 percentile you are eligible for a particular college. आप उसके नीचे percentile में है तो आप second उसके नीचे के कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं. So ये एक्चुअली द पर्पस ये था कि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए और किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड के बच्चे को ज्यादा बेनिफिट ना मिले, स्पेशली especially the lenient boards, like we have boards down south जहाँ पे कि बहुत सारे बच्चों को 100% मार्क्स आते हैं. We do have leniency in the last 4-5 years in the CBSE board as well as ICSE board. कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, थोड़े कंजर्वेटिव बोर्ड होते हैं. तो the government feels that some of the students or the majority of the state board students are left behind,
उसको एक सेम प्लेटफॉर्म देने के लिए ये एक्चुअली सेम प्लेटफॉर्म देने के लिए उन्होंने बेंचमार्क जो पकड़ा है वो एनसीईआरटी का सिलेबस पकड़ा है, राइट? बट and the kids who are watching this video can also add their thoughts on it. अभी हम डिस्कशन कर रहे थे एक इंटरनल मीटिंग के अंदर, जहां पे हमको ये पता चला था कि जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके हिसाब से उन्होंने काफी चैप्टर्स किसी किसी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी से ओमिट कर दिए हैं. दे आर नॉट चेक्ड इन द एग्जाम. नाउ माय क्वेश्चन दैट कम्स हियर इज, व्हिच आई कुड नॉट फाइंड द आंसर्स टू, इज दैट कि बॉस जो डिलीटेड सब्जेक्ट हैं वो एनसीईआरटी का तो फिर भी पार्ट है. हो सकता है सीबीएसई ने उन्हें डिलीट किया हो, आईएससी बोर्ड या स्टेट बोर्ड ने उन्हें रखा हो, तो क्या वो डोमेन में वो डिलीटेड सेक्शन भी आएगा? दैट इज स्टिल सम क्लैरिटी दैट इज रिक्वायर्ड ऑन दैट. Karthik, I hope you have got your answers. The couple of questions that have also come on the is that will the applied maths be considered equivalent to standard maths or not? So इससे पहले I'd probably take this question. जो हमारे पास एक बेसिक डॉक्यूमेंट आया था फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक बहुत क्लियरली बोला था कि फॉर इको ऑनर्स अप्लाइड मैथ्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, राइट? बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाइड मैथ्स कंसिडर किया जा रहा है. अभी उस चीज पे और क्लैरिटी नहीं है, बट बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द स्टैंडर्ड मैथ्स और द बेसिक मैथ्स, not the applied maths. So that is again one area that is not being clarified, and whether applied maths is going to be considered equivalent to will be an eligibility for DUJAT as well for BMS colleges. However, again इसके अंदर भी एक ही मैथ्स का एक ही डोमेन माना गया है, which is basic maths. अप्लाइड मैथ्स का कोई अलग से डोमेन पेपर मैंने उनकी लिस्ट में नहीं देखा, which clearly says that Delhi University is not going to be considering applied maths for a lot of things. They are going back to the original thing कि मैथ्स ही है, अप्लाइड और बेसिक में फर्क नहीं होना चाहिए. So it is going to be disadvantageous for some students who've taken applied maths currently. Yeah, so आदर्श एस के अंदर एक और जो है क्वेश्चन था कि आई एम अ साइंस स्टूडेंट एंड आई एम कॉन्फिडेंट इन मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, विल इट बी कंसिडर्ड फॉर ऑल कोर्सेज लाइक बीकॉम एंड इकोनॉमिक्स? सो बीकॉम के अंदर पहली तो चीज बहुत क्लियर ये है कि आप कोई भी ऐसे डोमेन में अप्लाई नहीं कर सकते जो आपने 12th में नहीं पढ़ा हो. तो अगर आप बीकॉम की बात करें, बीकॉम के अंदर मैथ्स कंपलसरी है, बट उसके अलावा आप डोमेन में 3 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं. तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बेसिस के ऊपर शायद बीकॉम में अप्लाई कर पाओगे. मेरे हिसाब से वो पॉसिबिलिटी कम लग रही है मुझे, बिकॉज दे आर द डोमेन इज चेकिंग ऑन योर नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट यू हैव स्टडीड इन 12th. बीकॉम ऑनर्स में फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं. सो for me it sounds very difficult whether a physics score is going to get considered for BCom honors also. So see, Kush, depends, you're a science background student, depends completely on the subjects that you want to apply. So अगर साइंस है तो साइंस के जो आपने सब्जेक्ट पढ़े उसके अलावा आप कोई सब्जेक्ट ले ही नहीं सकते डोमेन में. मैक्सिमम 6 ले सकते हैं, मिनिमम 1 है. राइट, सो दैट इज हाउ इट इज. जैसे अगर आप बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे स्कोर इन 3 डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 is going to get counted. List B1 has 18 subjects. That's itself a long list. उसके साथ साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि यार आपका स्ट्रीम चेंज करने में कोई डिसएडवांटेज नहीं होने वाला. सो विनीत सर, एनी थॉट्स ऑन दिस? Sir, this was actually the confusion कि एक तरफ वो कह रहे हैं categorically कि you can apply for the domain which you have studied in class 12. जो लैंग्वेज और जो डोमेन आपने पढ़ा है 12th में आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं वो कि स्ट्रीम चेंज में there is no disadvantage. So again there is it puts a lot of question in this. And I was actually searching on the DU website कि आज शायद उनका कुछ notification आने वाला था. I could not get the answer for this. And as you rightly said, if somebody is from BCom honors, he wants to go for physics honors, chemistry honors, maths honors, तो उसको वो डोमेन के उसी सब्जेक्ट्स वो पढ़े होने चाहिए तभी वो एग्जाम दे सकता है. 11th 12th में उसने फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो he cannot take physics and chemistry from B1 of domain specific. So this is फिर क्या BSc सब्जेक्ट्स के लिए अकाउंटेंसी का सिलेबस चल जाएगा?
नो सर, वही चीज है जिसने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ा है सर, if he is willing to appear for accounts paper, if he is willing to appear for example other paper like psychology honors, I don't think so that this notification is permitting that. ये notification को permit नहीं कर रहा है. मुझे ऐसा लगता है सर, what I feel that other universities might approve this. हो सकता है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज ऐसा कर दे, might be possible कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो, but I am not, I can't see the probability in the Delhi University, especially. So, iski more clarity probably will come in the open houses that yes DU does. Purva Arora is asking, sir, what is the weightage of section 3 in CUET? अभी तक weightage नहीं बताई गई है बेटा. उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि कौन से सब्जेक्ट जिसको आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या प्रोसेस लेना पड़ेगा. Right. Another very bizarre thing that I found was कि आप ये बोल रहे हैं at the top of it कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ CUET के बेसिस पे होंगे. But if you look at the minority college admission process, it clearly states that 50% of the seats will be reserved for Christian minorities, and these minority institutions can conduct their own interview/test. जो पहले भी होता था. तो किस बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि एडमिशन जो है वो सिर्फ CUET के बेसिस पे हो रही है, क्योंकि ये पहले भी था, ये आज भी है, राइट? सो व्हाट हैज चेंज? नथिंग हैज चेंज. सो व्हाई कॉल इट डिफरेंट? व्हाई कंफ्यूज द स्टूडेंट्स लॉट मोर? ये मेरे थॉट प्रोसेस के बियॉन्ड है इस वक्त कि यार क्या होने वाला है. सो एंड very interestingly, जो Zaina ने question पूछा है, Jamia and Aligarh Muslim University also part of CUET? Yes, they are part of it. Jamia has gone on record and said कि we will only use CUET score for admission to language courses and non-priority courses. For other courses like BMS, which they BBS or a management course or a law course, they will conduct their own exam. They will conduct their own exam. राइट. एक क्वेश्चन और है कि क्या कंपटीशन इंक्रीज होगा? बिल्कुल होगा. आई कैन फोरसी अ कंपटीशन इंक्रीजिंग मेनी फोल्ड. अगर आप पिछले सालों के अगर कोई आप डेटा निकाल के देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने लोग अप्लाई करते थे? द आंसर वाज about 3 to 3.5 lakh people used to apply to DU across courses, right? Now the question is, क्या एक बिहार यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी का, या any person who's probably from Kerala or anybody anywhere else, will they not apply to DU? The answer is yes, right? So instead of competing with 3.5 lakh people in the previous year, if you just look at the number of people who apply for or sit for 12th boards, that number is what, sir? Beneath, sir? So approximately, if you count all the states, all the boards together, it is around 1.32 crores. 1.32 crores people are going to be appearing for boards, and I'm assuming because all the central universities are going to take CUET, they are going to apply for this exam. So क्या कंपटीशन बढ़ेगा? बहुत ज्यादा बढ़ेगा. उसके साथ साथ आप ये भी साथ में बोल रहे हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और परसेंटाइल बेसिस पे होगा. तो SRCC हो गया, स्टीफेंस हो गया, LSR हो गया, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज हो गया, उनकी जब मेरिट लिस्ट बनेगी तब कट ऑफ जाने वाली है 99.999999, क्योंकि एक ही मार्क के ऊपर बहुत हजारों बच्चे हो सकते हैं. तो जैसे आपने कैट में देखा है, IIM अहमदाबाद में 99.9 परसेंटाइल लोग लेके बैठते हैं, यहां पे 99.9999 बहुत आगे जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे. CAT as an exam is also taken by maximum 3 lakh people. Here we are talking about 1.32 crore people. So competition definitely बढ़ेगा. So अगर मैं आपकी जगह होता तो पहले मैं अपने पेरेंट्स को कंप्लेन करता कि मुझे इसी साल की पैदा, मतलब when you were born, उसी साल ही क्यों पैदा हुआ? Because सारे एक्सपेरिमेंट तो आपके साथ ही हो रहे हैं, राइट? तो पहले तो ये कंप्लेंट थी. दूसरी कंप्लेंट मेरे साथ ये है कि कंपटीशन मेरे को DU में वैसे ही ज्यादा लगता था, अब वो और ज्यादा हो गया, और अभी भी 99.9999 परसेंटाइल के बेसिस पे ही एडमिशन मिलने वाली है. हाउ इज इट अ लेवल प्लेइंग फील्ड? Right? You are still
asking a student to perform very, very, very well in an exam. So how are boards any different? So these are my thoughts right now on it. So और सर इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है, मतलब ये लॉजिस्टिकल चैलेंज है कि मतलब पूरे इंडिया में आपको एक साथ एग्जाम कराना है in all the states and all the cities of India. वो thankfully अलग-अलग दिनों पे एग्जाम हो रहा है, वरना अगर एक टाइम का एग्जाम होता तो हालत खराब हो जाती। दूसरी चीज, इस चीज को यूनिवर्सिटीज एक्नॉलेज कर रही है एंड दैट द रीजन नाउ दे आर एक्चुअली वेरी क्लूलेस कि क्या मोडालिटीज होंगी एडमिशंस के लिए, बिकॉज इवन दे नो दैट कंपटीशन इज गोइंग टू इंक्रीज मल्टीफोल्ड, because there is common examination. So that is going to be a big challenge for UGC, for NTA, and for all the universities as well to see that how they are going to give admissions. मेरे हिसाब से इसमें DU के पास जो लोग जाएंगे वो तो मतलब obviously 99.9999 वाले जाएंगे, तो kids would be good, but I think it will reduce in value over a period of time if this continues. ठीक है, सो एक दो क्वेश्चंस और हैं जिसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। Parishi Gupta, I'm a science student and I'm wanting to apply to BA Eco Honors. I don't have a strong hold on my PCM. Moreover, there are a list of topics. Yeah, so we've answered that. So that is a clarification that DU has not answered yet, or NT has not answered yet. So we'll have to wait and watch what do they say about the defined syllabus that is going to come. राइट, परीशी मैं आपके साथ हूं बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से आप इस बैच के साथ तो कुछ भी फेयर नहीं हुआ है। पहले बैच हैं जो आपको 12th एज वेल एज 12th में भी 2 बोर्ड देने का मौका मिल रहा है, राइट। पहले आप बोर्ड देंगे, फिर आप टर्म 1 को रिवाइज करेंगे, क्योंकि टर्म 1 तो आपने पढ़ा नहीं है टर्म 2 के अंदर, राइट। एंड देन यू विल बी अप्लाइंग टू अ एग्जाम दैट crores of people are going to give. So obviously life is not fair for you guys. So again, my sympathies to it. Then the other question is, what should be the preparation strategy to manage board and CUET? See, Lakshay, board per se is not going to be required anymore. Board का score is not going to be. But पढ़ाई आपको board के लिए करनी है, क्योंकि domain में वही चीजें एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ वो चीजें आएंगी जो आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। सो बोर्ड को आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। यू विल हैव टू वर्क विद ऑन इट एज वेल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या आपको सिर्फ CUET के लिए पढ़ाई करनी चाहिए? मेरा आंसर नो है, क्योंकि जितना कंपटीशन अब CUET के अंदर होने वाला है, फॉर यू टू क्रिएट चांसेस, it is advisable that you have other options also open. So not just CUET, should also be applying to say an IPM Indore or a Rohtak or a GMAT or an RC Monji or a Symbiosis, just to be assured that you have a seat to go to. Obviously, you will fight to get a seat in a DU college, and we'll see how this picture unfolds when the exam is taken, right? But it is anybody's guess, right? We'll have to wait for it now. And sir, droppers eligible? Yes, you are, but you will have to go back to your domain that you have left studying a year ago. So you'll have to go back to that. So for droppers, it's not easy. But we don't know when the syllabus clarification is going to be mentioned. So yes, it's a lot of anxiety that is going to happen, but DU ko, I think issues hain. There are issues there. Right? Any things that you want to dropper strategy? What should a dropper do, Vineet sir? So सबसे पहले तो ये somebody Ayush is asking, are droppers eligible? तो मैं technically जो legally जो notification आया उसके sense में आपको बता दूं आयुष को कि आयुष 12th appearing are certainly eligible for CUET. Now are droppers eligible? तो इसके लिए UGC ने पूरा power universities को दे रखा है। That universities decide करेंगी कि for which course droppers are eligible, for which course they are not eligible. But by and large, India में एक tradition है, एक practice है, even in IITs or other examination, that droppers अगर 1 साल के dropout है तो you are eligible. That is the first thing. So by and large, जैसे sir ने कहा कि you would be eligible.
I'm not saying that you are 100% eligible, but by and large जो convention है उसके हिसाब से आप eligible होंगे. दूसरी चीज है कि how to what should be your strategy. Strategy plain and simple है. आपके पास time है, you are a dropper, you have time. Invest lot. So first of all, be very clear that which course are you applying for. ये course ही decide करेगा कि आपकी strategy क्या होगी. If you are applying for BMS, BBA, FIA or any management course in Delhi University, आपका focus दो बहुत ही main focus होना चाहिए. First is your domain, that is mathematics of class 12, right? Along with that, 2 more papers could be English or could be could be economics or some other third paper, right? Mathematics तो रहेगा ही रहेगा. And 60 questions जो आपको out of 75 questions जो 60 questions आपको आंसर करने हैं aptitude में, वो आपका forte होना चाहिए. क्योंकि आप इस तरह से देखिए, if you are applying for BMS per se, you are attempting 40 higher maths question of class 12 under mathematics category of domain specific. आप 40 questions attempt करोगे economics के और 40 question किसी तीसरे subject के. 120 questions you will be solving in the domain specific. 60 questions you will solving in the aptitude test and 40 question in English language paper. तो आप ये समझिए कि 120 मार्क्स आपके डोमेन स्पेसिफिक में, 60 मार्क्स आपके एप्टीट्यूड में which is 180 and 40 मार्क्स जो हो गए आपके इंग्लिश में हो गए 220. अब इस 220 में अगर आप देखिए तो इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड दैट काउंट्स टू 100 मार्क्स. तो 100 मार्क्स का तो लिटरली देखिए एक तरह से तो एप्टीट्यूड ही है. मैं इसमें लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर रहा हूँ एप्टीट्यूड को, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैराजिम्बल्स, ग्रामर, इट इज अ पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड. और उसके लिए अलग से सेक्शन हमने बना दिया है यूजीसी ने, लैंग्वेज. तो 100 मार्क्स को तो एप्टीट्यूड है. आपके पास समय है, आपके पास स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि प्लीज फोकस ऑन द एप्टीट्यूड, दैट इज द नंबर 1. एंड सेकंड थिंग इज जो डोमेन स्पेसिफिक में 120 मार्क्स का मैथ्स, इको एंड वो है, उसको आप जरूर देखिएगा. गो बैक टू योर 12th सिलेबस, टेक द एनसीईआरटी बुक्स, सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. सो यस सर प्लीज कंटिन्यू. एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स आप उठाएंगे, एनसीईआरटी बुक्स उठा करके अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चंस आर वेरी लॉन्ग. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है, मैथमेटिक्स में अगर आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ये देखेंगे, इट्स अ वेरी लेंथी, एक पेज, 1.5 पेज का, 1.5 पेज में बनने वाला क्वेश्चन है. बट कैटेगरिकली इस बात को समझिए कि CUET में जो भी क्वेश्चन आएगा दैट इज नॉट सब्जेक्टिव, इट इज गोइंग टू बी MCQ बेस्ड. सारे क्वेश्चंस MCQ बेस्ड होंगे. सो दैट रियली मींस कि ऑल्दो सिलेबस इज ऑफ क्लास 12 NCERT, बट जो क्वेश्चंस आएंगे वो डेफिनेटली DUJAT के पैटर्न पे ही होंगे. बिकॉज हाउ कैन यू मेक स्मॉल गुड क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, देन यू हैव टू फॉलो द एंट्रेंस पैटर्न. यू कैन नॉट फॉलो द CBSE पैटर्न. राइट. सो दैट इज द अल्टीमेटली एंट्रेंस पर इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है. मतलब अल्टीमेटली जो DUJAT का पुराना पैटर्न था, जो आप हायर मैथ्स पढ़ते थे, वैसे ही क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करते हैं. एब्सोल्युटली. So this also answers one question, sir. Will DUJAT happen this year? So DUJAT per se DUJAT के तौर पे नहीं किया जाएगा. वो CUET के aptitude part और math जो BMS में आता था वो आ ही रहा है, और इंग्लिश जो लैंग्वेज सेक्शन 1 में है वो उसके थ्रू ही कंबाइन करके एक DUJAT बन रहा है. पैटर्न मेरे हिसाब से मैथ का सिमिलर होना चाहिए. लॉजिकल रीजनिंग शुड बी ओके लेवल. जनरल अवेयरनेस शुड बी स्लाइटली ऑन दी मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल. थोड़ा तो डिफरेंशिएशन बनाएंगे. अगर वो पेपर को आसान बना देते हैं तो then this entire process of CUET will go to the dogs, because it will not give you that result that you are expecting. यहाँ जी smoothly conduct हो जाएंगी चीजें, and we'll have clear people who are going to get into SRCC or going to get into Atmanam Sanatanam College. So ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होने वाला. It will be that. So domain प्रथम पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा आयुष यार, हम उस चीज को we are not going to be teaching you domain, right? जो मैथ का पार्ट है वो BMS लेवल के हिसाब से जो पहले आता हुआ है वो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है. बट अगर आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स ये सब चीजें पढ़ाएंगे, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, राइट? सो यू ऑलरेडी गॉन टू योर ट्यूशन सेंटर, टू स्कूल, यू हैव डन वेरी वेल, यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेरी हार्ड फॉर योर बोर्ड. So that should take care of your domain as well. But हाँ, जब प्रथम की CUET की टेस्ट सीरीज आएगी, you will have access to everything. Or that will be only in a test format. सर सांची का क्वेश्चन है, आई थिंक भी आप शायद आंसर कर पाएंगे. I am having difficulty in managing both entrance exam and board preparation. Please suggest.
Yeah. How to manage both. Yeah, how to manage it, yes. ये बेसिकली क्वेश्चंस आज जितने क्लास 12th में बच्चे हैं वो सारे बच्चों का एक ही सवाल है कि हाउ टू मैनेज बोथ। सांची, सबसे पहली बात ये है कि यू नो आई नीड टू टेल यू दिस दैट यू नीड टू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी दैट व्हिच कोर्स यू वांट टू टेक एडमिशन टू। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लैरिटी होना, बिकॉज वंस यू हैव द क्लैरिटी आपकी प्रायोरिटीज बन जाती। If you don't have the clarity, you don't have the priority. Let me tell you this. Clarity brings priority. So if you are very focused कि हाँ भाई मुझे CUET में जाना है, CUET के थ्रू शहीद सुखदेव जाना है, या मुझे IIM इंदौर जाना है, या मुझे IIM रोहतक जाना है, you know, if you are very much clear in this, then the answer is that, you know, you are 70% very clear that आपका focus area क्या होना चाहिए, and by default your focus area should be entrance now. इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड्स आप इग्नोर कर दें। इसका रीजन ये है कि बोर्ड्स को आपको इस तरह से पढ़ना है कि ताकि वो आपके एंट्रेंस में भी काम आ जाए। Are you getting my point? You don't have to study about the board examination so that you just get good marks and और आप CV पे दिखाते रहे कि इतने मार्क्स आए थे, इतने मार्क्स आए थे। वो इंपॉर्टेंट है, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको किसी IPM में कहीं पे एडमिशन लेना हो तो इंटरव्यू में 11th एंड 12th के 10th एंड 12th के मार्क्स काउंट होते हैं। बट राइट नाउ स्टडी द बोर्ड्स in such a way so that it is very much helpful for you in preparing for entrance examination. Study conceptually. Do not mug up the things. अभी भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, they tend to mug up the things. वो लंबे derivation, लंबे integration, differentiation, economics के पढ़ रहे हैं, but you know they are not studying for conceptual knowledge. They are just studying to, you know, get good marks. That is not the way, right? So if you are conceptually very clear about what you are studying, ultimately it is going to help you in the entrance examination. Doesn't matter which entrance examination you want to appear for. DUJAT, sorry, CUET देना है, आपको IIM इंदौर देना है, IIM रोहतक देना है, any entrance examination it is going to help you, right? So first of all, please bring clarity that what you want to do. Then that clarity will make you prioritize your things. So there is a very interesting question by Aisha Walia. She's saying, is as BGMC will not come under domain, so can you tell me something briefly about? I think पहली तो चीज आपको ये समझना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 कोर्सेज हैं जो मास कॉम जर्नलिज्म को मिलते जुलते हैं। पहला इज हिंदी जर्नलिज्म, सेकंड इज इंग्लिश जर्नलिज्म, थर्ड इज a course called BMMC, Bachelor of Mass Media and Communication, and last is Integrated Masters in Journalism. पहले क्या होता था कि जो BMMC है और जो Integrated Masters in Journalism है, they used to have their own entrance exam, which is predominantly based on aptitude with some elements of media also added. Abhi, if somebody wants to apply for these courses, maybe you'll have to study you'll have to give domain as well as the aptitude part that has not been clarified. अगर आप ध्यान से देखें तो BA Honors in Hindi पत्रकारिता, which is Hindi journalism, has been put under compulsory aptitude part compulsorily, ठीक है। But इसके अलावा जब आप English journalism की बात करते हैं, then you can study one language from section 1 and couple of domain sections from B1 as well as B2 के अंदर अगर आपने mass communication 12th में as a subject पढ़ा है। Otherwise 3 domain is what they will ask for. So for this I can share something जो कि बच्चों को थोड़ा इनको clarity मिल सकती है, so they can have a look at this table. So this does not answer all their questions, but एक brief idea उनको जरूर मिल जाएगा कि what is it going to be like. So this is something which I have shared, you know subject wise or course wise. So BSc के लिए these are the things required. For BSc, any one language with minimum 30% marks is mandatory and 3 subjects domain specific, right? For BA, any one language, and there are 2 combinations. पहला combination है कि अगर आप 3 subjects लेते हैं, right, domain specific में जिसमें 2 subjects B1 से लेते हैं और 1 subject B2 से लेते हैं, then you might not be needed to go for general test. But if you opt for the second option is 1 language paper, 1 paper from either B1 or B2 in the domain specific, then you should be writing the 60 question of general test. यानी कि आपके लिए एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर आपको BA भी करना है, अगर आप you want to go for BA honors, there is a possibility, there is a provision that you might have to appear for the aptitude test if you are going for the second combination, right? So अभी तक क्या था? अभी तक ये था कि BA honors के लिए आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना था वो मेरिट के बेसिस पे होता था, एप्टीट्यूड का कोई रोल नहीं था। बट CUET के हिसाब से
if you're opting for this option, one language, one subject from domain specific, then you will have to write the 60 questions of general test. बी ऑनर्स में भी अगर बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं बीकॉम ऑनर्स, तो बीकॉम ऑनर्स में एक लैंग्वेज कोर्स, राइट, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर 3 सब्जेक्ट्स इन डोमेन स्पेसिफिक, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द 60 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस. बट अगेन इस केस में भी अगर आप वन लैंग्वेज कोर्स एंड वन सब्जेक्ट of B1 या B2 select करते हैं, then also in this case also you are going to write the 60 questions of general test. इसका मतलब कि BA honor, BA और BCom दोनों के लिए ही you would be required to appear for general test if you opt for the second combination. अच्छा, तीसरी चीज BMS, BBFI और BBE के लिए एक लैंग्वेज कंपलसरी है, and preferably I believe हो सकता है, ये संभावना है कि आप लोगों के लिए जो DU में अप्लाई कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि एक लैंग्वेज इंग्लिश आगे जाकर के शायद कंपलसरी कर दिया जाए, बिकॉज इट्स ए मैनेजमेंट कोर्स, और मैनेजमेंट कोर्स में बाय एंड लार्ज इंडिया में कहीं भी मैनेजमेंट जो है वो दूसरे लोकल लैंग्वेज में या दूसरे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होती. इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट इंग्लिश कर दिया जाए, ये तो मैंडेटरी होगा. इसके अलावा मैथमेटिक्स इज समथिंग व्हिच इज मैंडेटरी, ये रहना ही रहना है. और उसके अलावा B1 में से 19 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, and the third subject you can take is either from B1 or B2. यानी 3 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, जिसमें कि मैथ्स कंपलसरी है और सेक्शन 1 तो कंपलसरी है लैंग्वेज के पेपर. And this 60 questions of general test, this is also compulsory for you. So that really means अगर मैं ओवरऑल मैक्रोस्कोपिक व्यू की बात करूं, तो आप बी ऑनर्स करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, या बीबीए एफआईए करना चाहते हैं, बीएमएस करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, राइट. बीबीए बीएमएस में और बीबीए एफआईए में जनरल एप्टीट्यूड इज कंपलसरी. दूसरे 2 कोर्सेज हैं बीए और बीकॉम ऑनर्स में, जनरल एप्टीट्यूड कुड बी कंपलसरी इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर द सेकंड ऑप्शन, राइट. और एक चीज और मैं बता दूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि मैथमेटिक्स कौन सी चीजों में कंपलसरी है. सर, ये बहुत सारे बच्चों का होता है कि मैथ्स किस में कंपलसरी है. सो दीज आर द कोर्सेज जहां पे कि मैथमेटिक्स को मैंडेटरी कर दिया गया है. इस सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 में फर्स्ट पेपर विल बी मैथ्स, ये तो कंपलसरी है. बाकी सेकंड पेपर और थर्ड पेपर आप चूज करेंगे अपने कोर्स के हिसाब से जो आपने 12th में पढ़ा है. बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा सर, जो ये मैथ्स आएगा विल बी सिमिलर लेवल टू व्हाट गेट्स कवर्ड इन बीएमएस. सो आप इसको प्योर मैथ डोमेन के हिसाब से ना समझते हुए मैथ दैट गेट्स चेक्ड फॉर बीएमएस को अगर माने, तो दैट विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. बिकॉज अगर आप डोमेन की बात करें तो यू रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टू व्हाट इज इन एनसीईआरटी. हाउएवर वी अंडरस्टैंड दैट मैथ बीइंग सच अ dynamic subject, they cannot only restrict themselves to NCRT होगा, but उस बेस को पकड़ते हुए अच्छे क्वेश्चंस भी आपके पास डोमेन में इस सेक्शन में आ सकते हैं. सर, इसमें ये सबसे बड़ी बात क्या है ना कि किसी भी बच्चे को अगर एंट्रेंस के बारे में जरा भी अगर नॉलेज होगा, तो उसको एक चीज आई होप दैट अभी तक उसको अपने विजडम से ये समझ में आ गया होगा कि when we talk about 12th NCRT ना, तो 12th NCRT का अगर सिलेबस अगर आप देखें तो क्वेश्चंस वैसे बहुत कम है जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए पाए. स्पेशली ऐसे बच्चे ऐसे एग्जाम में जिसमें कि 1 CR प्लस अगर बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, उन बच्चों उस लेवल पे compete करने के लिए क्वेश्चन हैज टू बी रियली गुड. डोमेन में आप इजी क्वेश्चंस, मतलब one cannot afford to ask easy questions. So when it comes to 12th level NCRT and that too objective, ये अपने आप में एक inherent meaning है that questions would be good in nature, it will be good level, and it will be up to the level of either BMS or up to the level of various very good entrance examination. तो ये implied meaning बच्चों को समझ जाना चाहिए कि आप प्लीज ये मत समझिए कि 12th ही का तो NCRT है, हम तो 12th के NCRT सॉल्व इक्वेशन, सॉल्व एग्जांपल बहुत सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज बहुत सॉल्व करते हैं. नहीं साहब, वो बोर्ड्स में काम आ सकता है सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव आप जो सॉल्व करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द क्वेश्चंस वुड बी वेरी कॉन्सेप्चुअल इन नेचर and would be based on the past entrance pattern of BMS. That has to be very clear to everybody. मेरा एक और क्वेश्चन है इस पूरे फॉर्मेट को लेके, and I'm just wanting to ask all the students. तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का तो उन्होंने CUET बना दिया, बट अगर आप गौर से देखें तो IIT के अंदर और मेडिकल के अंदर भी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो ही चेक होता है. तो उन एग्जाम्स को इसके अंदर क्यों नहीं मिलाया गया, उनको अलग क्यों रखा गया है, उसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, राइट. अगर आप एडमिशन इनटू गुड कॉलेजेस ऑफ DU को इस
आई मीन कंफ्यूज सिस्टम से एडमिशन आप दे रहे हैं, तो आईआईटी ने कौन से पाप किए उनको भी डालिए। फिर आप एनटीए अलग एग्जाम क्यों कंडक्ट करता है फॉर एनसीएचएम जेई जो होटल मैनेजमेंट के लिए एंट्रेंस एग्जाम, उसको भी इसी में डालिए। उसमें भी तो एप्टीट्यूड आता है, वो आप इसके थ्रू भी ले सकते हैं, बट उनके पेपर अलग हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन पेपर सेम है। सो it's very disappointing. Yes, sir. Indeed, it's disappointing. Couple of more questions. Sanchi says that I'm very sure about the course, but I want to go forward with, but I'm unable to manage such syllabus. See, again, my sympathies. You are one batch that is difficult to justify, but अब जो है वो सबके लिए same है. So you will have to learn the art of time management as you go. You will have to manage both the things, right? I'm sorry, but there is no answer for it. आरडी शर्मा के ऊपर शाश्वत के बेसिस पे आपको एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आ जाएंगे, बट उनकी जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत सही होने चाहिए. There's a question, sir. If more than one student gets equal marks, then what will be the selection criteria? Then हो सकता है कि जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके उस सब्जेक्ट के जो आपके डोमेन मार्क्स हैं कैन बी द टाई ब्रेकर. जिसके ज्यादा है उसे मिल जाए. That's how we look at it, right? So and another weird factor is कि आप बैच हैं जिनके साथ 2 बोर्ड का मॉडल चेक किया जा रहा है. Then you come across and see, okay, we'll make life further difficult for you, and we say you give a CUET entrance exam. Right? And then they expect you to compete at a national level exam by preparing for only 25 days more. So ये कहाँ से justified है आप बच्चों के लिए? And it's not just CUET. Other entrances for other universities have also played a very poor prank on you by asking you to appear for exams within 10 days of you finishing the course. NCHM JEE का एग्जाम जो है आपका 16th जून को है, which is just the next day of all boards finishing. आपका 19 जून को CLAT है, hardly any time. आपका 25th जून को SLAT है, Symbiosis Law Entrance. Then on 26th तो सबने बहुत ही अच्छा किया कि you have 3 exams happening on that day. You have IIM Rohtak, you have Symbiosis BBA, and you also have AILET exam happening on that, right? And then on the 2nd July you have the IPM Rohtak exam. So अगर मैं calculate करूं, your boards finish on 15th of June, you hardly have 15 days. जिनके 7th जून को खत्म हो रहे हैं उनके पास शायद एक हफ्ता एक्स्ट्रा है, but that in that week also you are going to compete at a level where students have been preparing for 2 years, 3 years, and be good enough to beat the competition and get a seat, right? So that is how the math I'm not able to solve for the kids, right? Yes, CUCET and CU, so beta Sanchi, CUET and CUCET are same thing, right? पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये समझें कि पिछले साल तक CUCET होता था, अब उसका नाम चेंज करके CUET कर दिया गया. CUCET के अंदर जो पेपर पैटर्न था वो CUET के पेपर पैटर्न से बहुत अलग है. It is an altogether new mechanism that they have come up with, right? So syllabus wise for the aptitude part, kind of मतलब maths थोड़ा अच्छे level का होगा, but up to maths they're checking via the math paper that you have to give, right? Right, so that is that. Yes, they are not making things. So till yesterday at Pratham we were looking at a certain pattern that we need to follow to create the mocks. Today with the article and the clarification coming, it's an altogether a different ball game altogether. मतलब कुछ जो pattern था जिस पे हम काम कर रहे थे, that has completely gone out of the window. Now we have to work on an altogether new pattern. उसके अंदर भी हर सब्जेक्ट का क्लैरिफिकेशन, हर सब्जेक्ट की चॉइस पैटर्न सब अलग अलग है. It's a mind numbing thing of complexities that they've created. अगर ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है तो आप जो लोग दे रहे हो तो आपके लिए डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड होगा ही.
Yes, it is driving you crazy. Yes, I can totally understand, Adit. निश्चल 26 जून के दो मैनेजमेंट एग्जाम्स. हाँ, so morning evening shift हो सकती है. You'll have to figure out that part. And my earner suggestion would be to go for an exam that has more seats, right? सुहानी, हम डोमेन कैसे पढ़ाएंगे यार? आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो डोमेन. हम आपको डोमेन की नॉलेज वाया टेस्ट सीरीज के देंगे, वाया जो आप CUCT के प्रिपरेशन के लिए जो आप एग्जाम देंगे उसके लिए देंगे. We'll probably give you a question bank. But if you ask us to go to teach you domain, which is essentially the entire 1 year syllabus, that's not possible. It will be unfair to you. It will further confuse you. So it is no point getting into that segment. You have to go back to your school teachers as well as your tuition teachers to help you with the domain, right? Sir, no, Bhavna, this is what you have to figure out. ये तो question थोड़ा आपको खुद आंसर करना पड़ेगा. Sir, Adarsh Kumar is a question which probably you will be able to answer. Which course can I apply for with computer science and math as a domain? Okay, so others, actually there are many courses wherein you can apply for CS plus mathematics को लेकर के आपको डिसाइड करना है कौन से कोर्सेज में. आप मैथ्स ऑनर्स के लिए जा सकते हैं. I believe that if you're a science student, you can go for physics honors, chemistry honors, right? Also mathematics is compulsory, so you can go for BMS, BBA, FIA, BBE, right? आप management के courses के लिए जा सकते हैं. So आप technically science के courses के लिए तो जा ही सकते हैं, provided you have mathematics plus science, subjects. And if you are mathematics plus if you are a account student, तो definitely आप management में जा सकते हैं, BCom honors में जा सकते हैं, BCom में जा सकते हैं. So you can get into so many courses. CS plus mathematics, you have so many combinations available for you. So there is another course called BSc Computer Science. That is also that you can do. Yes, yes. Right. So there are a couple of other questions. So we'll probably take those questions right now. Okay. Purva says for BMS Math domain, we don't have to do 11th. But if you're applying to say an IPM, उसके लिए आपको 11th as it is पढ़ना ही पड़ेगा. So आप एंट्रेंस प्रिपरेशन को सिर्फ CUCT के एंगल से, CUET के एंगल से मत देखिए. Look at it as a broader preparation for not just BMS CUET via CUET, but also for say an IPM or an RC1G or a symbiosis or any other. Right. So for CUET, 12th maths is going to get checked, but when it comes to IPM, they are going to check your 11th and 12th math. Purva, let me give clarity on this. So out of 60 questions जो mathematics में पूछे जाते हैं IPM इंदौर के examination में, वो 60 questions जो subjective plus MCQs मिला करके उसमें आपको 10 से 12 questions आपको class 11th के maths के मिलेंगे. ये सच्चाई है. So you cannot take the risk of ignoring class 11th mathematics. Minimum 12 questions आपको 11th के maths से रहेंगे. Okay, so Nishchal says. So Sapna says, is there a for both CUET and CA? No, there is no combination course for CUET and CA Foundation. They दोनों अलग-अलग directions में जाने वाले हैं. CUET नया exam है. I think they've rushed into it without thinking too much into it, and they've caused a lot of problem. CA Foundation has been happening for some years, so it should be okay for you to manage. But जहाँ तक मुझे अंदाजा है, CA Foundation के अंदर 11, 12 दोनों का syllabus check होगा. Nishchal, I've kind of answered your question. Sanchi, if you're applying to prepare for psychology via CUET, yes, you will have to stick to 12 psychology only. But अगर आप बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, like Christ, जहाँ पे psychology courses हैं, then you will have to prepare for psychology not just of 11th but for 12th also, but in a multiple choice question. So, Ani, you probably need to get back to the person who's enrolled you, but domain is something that we will not be getting into. We are going to be helping you with question banks, with e-lectures, with test series, but not get into the teaching of it. So there is a question which says, so practically a non-math student, and Benita, I'm posing this question to you.
will a non-math student or applied math student can't join management and commerce related courses? Again, this further needs more clarity from DU side. I would not say yes, you are right. I would not say no, you're wrong. I think there is more clarity that is required. Let me share something, sir. So last year, UGC University Grants Commission wrote to all the central universities that applied math should be treated at par with core mathematics of 11th and 12th. So UGC ने guideline दिया, but UGC ने finally it left to the individual universities to take the decision. UGC cannot direct, right? तो यूजीसी ने कहा कि भाई ये होना चाहिए हमारे हिसाब से, अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स को आप बेसिकली अलग ट्रीट मत कीजिए, उनको एक साथ ट्रीट कीजिए, ट्रीट देम एट पार. बट नाउ द पावर इज विद इन द हैंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज. यूनिवर्सिटीज डिसाइड करेंगे कि अप्लाइड मैथ्स को हम कोर मैथ्स के जैसे ट्रीट नहीं करेंगे या नहीं करेंगे. सो फार एज ड्यू की जो स्टैंडर्ड ड्यू कह रही है कि फॉर बीकॉम ऑनर्स कोर्स वी शैल बी टेकिंग ओनली कोर मैथमेटिक्स, नॉट अप्लाइड मैथमेटिक्स. वी डू नॉट नो, इस बार नोटिफिकेशन आने दीजिए. इफ DU allows applied mathematics to applied mathematics student to appear for BMS or BBFIA, that will be a different story. But as of now, applied mathematics student cannot apply for these courses. And ultimately power universities के हाथ में है. UGC ने सिर्फ गाइडलाइंस दिया है, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज इस पर डिसाइड कर सकती है. जी. Tushar says the science students can only choose PCMB subjects as their domain. Will compete with JEE NEET level students in PCMB subjects. Yes, that's correct. That's correct. But thankfully, PCMB or PCM students have an option of giving a different exam like an IIT or a NEET and CUET. And I don't see the reason why they all, if everything seems to fall under CUET, then why not these? Atishay, maths for 12th class if it's concerning to CUET, but if it is going to be for IPM, Indore or Narsi Monji, your 11th math is also going to get checked. Himakshi Mehendiratta, sir, if I'm not able to choose between Eco Honors and BBA, so if I prepare for aptitude and general test and choose domains which I think that is a very, very good approach, Himakshi. You will have to prepare for the aptitude part. For BBA will take care of the aptitude part of CUET. And in addition, you will have to study for math, which is 12th based. And if you want to apply for Eco Honors, then you will have to study maths to hoga hi hoga. Plus, you will have to study two other domain subjects, which could be economics or business studies or accountancy, whatever you're comfortable with. Right, Karthike. Is weightage of boards in? Yes, Ayush, pretty much weightage of boards have been removed. Yes, Zaina, each university, so अभी सिर्फ DU ने निकाला है, अभी कोई और यूनिवर्सिटी ने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने क्राइटेरियाज अभी नहीं निकाले, so you'll have to wait for it as well. Vishwas, I don't think there is a disadvantage, but yeah, I kind of think that you are getting a hard, I mean, not a fair bargain for what you've left your subjects for. So, yes, JS, DUJAT seems to have been combined with CUET. So, Hani sir, if I'm a PCM students with Eco and interested in courses like Eco Honors, Stats Honors, BBFIA, so which domain subject should I choose with Eco and Math? Anything that you are good with. You can take up, I mean, physics and maths you're not good with, but you will have to take one more domain subject along with the aptitude part that you can pick up. You'll have to do that. So between physics and chemistry, you'll have to take one option. Shashwat, very clearly, applied math students cannot go for Eco Honors. Vishwas, you can appear for BCom Honors and Economics Honors based on if you meet the criteria. Yes, yes. Arjun Raina, I don't think so. Anybody has been able to take that into consideration and we have been able to answer this.
NCRT, what comes in NCRT and what is checked in your syllabus is different. But that is the only possible way that they could bring everyone at the same level. Priyanshi, no, DUJAT seems to have been combined with CUET, but अगर आप उसको थोड़े डिस्टेंस से देखें तो it is similar in nature. But CUET के थ्रू होगा वो. Shashwat, applied maths for econ, I think is a no. Yes, Jay. That you'll have to wait and see, Khushi, when DU comes up with a clarification. Vivek, I think these are the questions that you are best left to answer from DU itself. So you should write them, the courses. Otherwise, Bineet sir, if you have a question on Vivek, answer to Vivek. So Vivek asks, sir, as DU told, we cannot choose subjects other than what we have studied in class 12. We have to give domain test in PCM for admissions in BA courses. Is it fair? Is it fair? So Vivek, as sir said, that ultimately, you need to get clarity on this. ये basically एक तो कहा गया है कि स्ट्रीम आप चेंज करेंगे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है. दूसरी चीज कही गई है कि आपने जो पढ़ा है उसी पे आपको एग्जामिनेशन देना है. So clarity needs to be there, right? And we need to wait for the further, notification of Delhi University. If I'm getting your question correct, I guess we have to give domain test in PCM for admission in BA courses. Is it fair? No, it is not fair. It is not at all fair. And let's see. But आप special batch हैं यार, आपके साथ अभी तक fair हुआ क्या है? Sir, please continue. So basically, just wait. DU ने already ये कहा है कि हम इस पे chat boards भी होगा, इस पे open sessions भी होंगे, open seminars भी होंगे, open webinars भी होंगे, और ये counseling desk भी होगा, जिस पे आपको सारी clarity दी जाएगी. Let DU come up with those facilities, and then your doubts would be clear, right? क्योंकि अभी सच पूछिए तो जब DU के जो senior authorities का जब interview लिया गया, तो they said that this is the macroscopic view, and by and large हमने outline बना दिया है. बट अब हम काम कर रहे हैं मोडालिटीज पे कि हमने कह तो दिया है, बट ये होगा कैसे, तो इस पे काम चल रहा है. तो अगर ये सवाल अगर आप DU से भी पूछें तो probably I think that they need to revise their stuff or they need to discuss stuff among themselves in order to answer your question, because most of the thing is not clear with you as well. अभी तो सर डाउट्स आनी शुरू हुई हैं, अभी तो काफी टाइम बाकी है. Quickly I'm taking more questions. Jay, we will not be getting into domain. Math, क्योंकि वो BMS से मिलता जुलता है, that is what we're going to be preparing you as math, BMS special math. But that will help you take care of your BCom and Eco honors as well. Amandeep says, sir, until last year it was not necessary to include maths. देखो मैथ्स में डोमेन देना पड़ेगा. अभी क्या बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 3 कुछ नहीं रह गया भाई. अब है Section 1, Section 2, Section 3 of CUET, right? For BCom honors, Eco honors, as of now, they are saying 3 domain subjects itself are enough. So you don't have to take Section 1, you don't have to take Section 3, but 3 domain subjects के अंदर अगर आप 3 domain subjects लेते हैं तो उसके basis पे आपका score and rank calculate होगी for admission into BCom or Eco. Arjun, they will go back to the NCRT. That's very clearly says NCRT. So yeah. Astha, if you're a non-math student, you cannot apply it for BA honors in business economics. Then in that case, sir, Astha should look for the other private universities. Yes. Which offer BA honors course, economics honors. टीचिंग मैथ्स जानवी नहीं है यार. टीचिंग मैथ्स तो अगर आप बोल रहे हैं कि हम मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, वो नहीं पढ़ाने वाले. हम आपको ये बताएंगे कि जो आपने मैथ्स पढ़ा है सब्जेक्टिव लेवल पे, उसके अगर क्वेश्चंस एमसीक्यू लेवल्स पे आते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी कैसे आंसर किया जाए, जो हम पहले भी पढ़ाते आ रहे हैं फॉर बीएमएस.
So it's not going to be difficult. Here, the only change that we see is that it will be restricted to 12th के chapters और 12th के topics. But जैसे ही अगर आप बात करते हैं for IPM, उसमें 11th आपके साथ आ ही जाता है. So that's how it is. यार असन मेरे को इसके आंसर नहीं पता यार. Whether you can give math domain exam as an applied math student, I don't have an answer to it. That DU has to get back to us. Devika, applied maths for econ is not a given. Rahul, I think मजाक तो आपके साथ चल ही रहा है यार. इस बैच के साथ मजाक के अलावा कुछ और हुआ नहीं. So again, I go back to the first statement that I started with. You have all my sympathies. So जो भी अभी तक ये सेशन दे रहे हैं, and if you are if you're okay with the content that we share, quickly like the video, share the video ताकि maximum बच्चों तक पहुंचे जो अभी confused हैं, जो अभी attend नहीं कर पाए इस session के through, they are able to get some clarity on it. And do subscribe to the channel and press the bell icon. Please do remember to like the video for sure and share it with your friends so that they're able to answer it as well. मानिया जनरल एप्टीट्यूड भी पार्ट ऑफ बीकॉम ऑनर्स. अभी बोलना मुश्किल है, आप कॉम्बिनेशन के साथ देखिए. अगर आप सिर्फ बीकॉम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या डीयू के बीएमएस कोर्सेज के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं. डोमेन ओनली देना होगा. सो दिव्य, अगर आप सिर्फ बीएमएस के लिए अप्लाई करें तो सिर्फ मैथ का डोमेन चल जाएगा, बट आप सिर्फ एक कोर्स के लिए नहीं अप्लाई करने वाले हो. सो यू विल हैव टू डू अ मिक्स ऑफ द कोर्सेज दैट यू वांट टू डू एंड देन बेस्ड ऑन दैट फिगर आउट योर डोमेन. Right? So yeah, that's how it is. So I think we have already exceeded an hour's time, and I would request all of you to keep noting down these questions, and maybe once we have more clarity, we'll come back and give you another YouTube live session, and let's hope for the best. Let's hope for the best, and let's hope that DU is able to stand up to our expectation, your expectation, and come up with justified explanation to what they are doing, why they are doing what they are doing. Rest, I think for this batch, it's all the same. So everyone from this batch is on the same boat. So don't feel that I have a disadvantage or you have an advantage. No, everyone is at the same level. All of you have been made fun of. So within that segment, you have to compete and come out at the top, right? We are there to help you with with whatever we can help you with, and I'm sure with Pratham you will be able to go far, not just in DU, CUET, but other exams as well. So in case you want to reach out to us, the numbers are mentioned there at the bottom. You can feel free to get in touch with us. Right, and we would like to wish you all the very best for your board preparation. Board preparation को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपका डोमेन है वो आपके बोर्ड्स के सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड है, plus additional things that NCRT contains. So good luck, all the best. We will keep coming up with more such videos. Keep subscribing to the channel. Keep tuned into whatever new videos we are sharing with you. All the way best. Thank you, Beneath sir, for all the effort that you've put in. Really appreciate your honesty with which you made the presentation and answered the question to the best of your ability. We are still developing our ability to answer them the best, and that will happen in due course, right? Thank you very much, guys. All the very best for you, for your boards and for your entrances after boards. I hope all of you get into a dream college after that. All the best. Good luck. Take care. And do remember to like, share, and subscribe. Thank you very much. Thanks, everybody, and all the best.